नमस्ते ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है आफ्टर आवर्स विद बेरीज। ये एपिसोड हम हमारा एक आई थिंक सब्सक्राइबर है जिन्होंने एक हमें बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। तो वी वुड लाइक टू स्टार्ट बाय एड्रेसिंग दैट क्वेश्चन। एक सेटअप डाला था मैंने एक 22 फरवरी के लिए, जहाँ पे मैंने ये ट्रेड प्लान था कि इफ द प्राइस गोज अबाउ 40,940 के ऊपर तो हम लॉन्ग करेंगे, और एक टारगेट रहेगा अराउंड 41,400 423, मतलब राउंड नंबर। और एक स्टॉप लॉस रहेगा 40,480 के आसपास। ये एक तो भी वन लाइक प्रॉपर 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड है। तो अभी एक सवाल इन्होंने पूछा है कि 500 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, प्रीमियम खत्म हो जाएगा। सो बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि अगर इधर आके स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और ऊपर वापस टारगेट देता तो तब तक उतना प्रीमियम नहीं मिलेगा। नो डाउट, ये आप टेक्निकली वो आप बराबर बोल रहे हो, उसमें कोई ये नहीं है। पर सेटअप के अनुसार आपको इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करने होते हैं, ना कि इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। मतलब अगर आपको ऑप्शन बाइंग ही करना है और नेकेड ही करना है तो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड ये इशू हो सकता है। तो उसको भी आपको काउंटर करना है तो आपको अगले एक्सपायरी को ट्रेड करना है, प्रीमियम ज्यादा भरना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू स्ट्रक्चर योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्लान टू यूज। तो मैं भी जब क्योंकि ये सेटअप्स मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, तो मुझे अगर लगता है कि हाँ ठीक है स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं बैंक 20 तक भी वो ट्रेड को स्ट्रक्चर करके बैंक 20 ईटीएफ में ट्रेड लेता हूँ या फ्यूचर्स में लेता हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि ये सेटअप। सो आई सिलेक्ट माई इंस्ट्रूमेंट ऑन द सेटअप। इज देयर एनीथिंग अंदर यू वुड लाइक टू ऐड टू दिस? नहीं, आई थिंक एंड दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ traders trading with reasonable capital go wrong. They डिसाइड कि मैं ऑप्शन बायर हूँ या ऑप्शन सेलर हूँ या मैं फ्यूचर्स ट्रेड करता हूँ, नहीं मैं कैश ट्रेड करता हूँ, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है। यू लुक एट द सेटअप देयर इज एंड देन यू डिसाइड व्हाट वर्क्स फॉर यू। अभी ये सेटअप में फॉर एग्जांपल अगर आपका पर लॉट 12,500 स्टॉप लॉस लेने का कैपेसिटी है आपके अकाउंट का, तो आप फ्यूचर लॉट ले सकते हैं। अगर नहीं है और अगर आप ऑप्शंस में रिस्क लेना चाहते हैं उतना कि 200 पॉइंट नीचे जाके फिर अगर मार्केट रैली करे तो वो डीके आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ले ले, तो आप ऑप्शंस में ले सकते हैं। मैं पर्सनली इस टाइप के सेटअप जो होते हैं वो हमेशा रेशियो स्प्रेड्स में लेता हूँ। तो अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो भी मेरा लॉस लिमिटेड होता है, क्योंकि मैं एक अगर कॉल बाय करता हूँ तो एक कॉल सेल करता हूँ या दो कॉल सेल करता हूँ, जो जिस रेशियो में मेरा ट्रेड होगा। एंड क्योंकि सेटअप वैसा है, अगर यही 30-40 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रहता तो मैं भी नेकेड कॉल बाय करता ये केस में, या नेकेड पुट सेल करता जहाँ पे भी प्रीमियम अच्छे होते। तो सेटअप देख के आपको अपना इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना है, या तो ऐसे सेटअप देखने हैं जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स में फिट होते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। मैं पर्सनली पहले सेटअप देख के फिर इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करता हूँ। सिमिलर सिमिलर। और इस पे एक आई थिंक ब्लॉग आई पोस्ट भी होप है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जो मैंने बहुत टाइम पहले लिखा था। यस। सो आई होप बेवकूफ ट्रेडर, आपका जो आइडिया, आई होप वी हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। एंड इफ यू फील फ्री, आप बताओ अगर आपके पास भी कोई अलग वेज हो जिधर आप अलग इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू अ सेटअप ट्रेड करते हो, वी वुड ऑलवेज हम्म। love to know. यस But this यस। is something we always wait for the setup and then select the instrument. Now let's move on to the Bank Nifty analysis for tomorrow. यस। Okay, I'm gonna remove this now because we don't need this. And coming back to the daily chart. Why is this like okay? Did I just shift out mine? Okay. Yeah. Now coming back to Bank Nifty, okay. Let's start from daily. So yesterday I did mention that spikes have the tendency to like how gaps fill themselves, big spikes also fill themselves. They call it unfinished business. So unfinished businesses are supposed to get finished. So now for me, this is the business here is finished. Okay, and we've tested the lower range of the lower limit of the range, and this is my favorite pattern. I can never. You can see I'm excited to see a false breakdown or a liquidity hunt hammer happen in Bank Nifty after. I am happy because this fulfills all my criteria: oversold market and a hammer which has trapped the seller. This is super. Like it's a 5-star setup for me. So now the plan is simple. Again, even if there's a hammer, I will wait for the price to cross 40,160. In this tomorrow, because it's a hammer, I might not wait for a closing. Again, some discretion, but
trader has to add it to his setup, how you trade the levels. But I'm giving you the level. I might just tomorrow, I might just take the breakout because the hammer really, I don't want to miss a retest. In fact, I might add if a retest happens. So I have already disclaimer. I have bought good amount of Bankbees today with a very small stop loss. So I'm hoping a swing trade over there also. Tomorrow, this level, I will use it as an intraday entry and see how it goes. I might structure it in options only and might finish square it off in intraday itself. So I have a bullish bias now on Bank Nifty. We found a hammer. Let's wait for a break above 40,180 levels. Moving on to Nifty. Nifty has, it would have been more. It would have been a 7-star setup if Nifty also would have. It's not a hammer. This hourly candle did trap the sellers, but it's again like come near the lows. And if you see the daily closing, I would have liked the daily closing to be above 15,000, 17,530 levels. That would have shown that it's trapped the sellers. Still, Bank Nifty and Nifty are two different indices for a reason. This would have added more conviction, but that doesn't mean I'm now going to take the Bank Nifty setup. I'm going to leave a Nifty to, because I'm not going to force a setup. Again, if we get a break tomorrow above 17,600, 620, yeah, then there will be added confidence for me in Bank Nifty trade. That's it for the indices. Moving on to stocks. What do you have, Ganda? Setup similar to Bank Nifty is actually forming in KotakBank, unsurprisingly. KotakBank has Yes. been lagging for a really long time. और ये जो सेटअप है roughly 1700 के राउंड नंबर से we are getting a bounce. Again in daily time frame you can see a hammer taken at support, and again Yes. oversold kind of pattern, back to back five Yes. six red candles, 5 red candles. So from here the RR becomes much favorable because Yes. I can simply put a 10-15 or even 1660 1650 kind of stop loss, and I can very easily let the stock ride as far as it goes. I already have Kotak Bank in my holding, but this looks like a decent place to add a little more for a favorable, rather smaller time frame trade. Which if SL hits, I will take the SL, reduce my quantity. If it doesn't, well, it will get added automatically to my holding. So that's for Kotak Bank, a very decent setup. But mind you, because the supply, rather demand zone is so large, I will take a much deeper stop loss. So let's say it opens at 1700 tomorrow, my stop loss will be 50 rupees away. So percentage wise, it's a long stop loss, but at the same time, I'm willing the stock to run all the way up to top of the range near 1950, 1980, even 2000. And if it breaks out, well, nothing like it. But it's again a wait and watch. So that's for Kotak Bank. Do we have any other setup? Let me No, I think this was the only one. We had given Reliance yesterday. Yeah. I would like to, it's not performing as it is, and I have cut my position from it. So that is something that I would like to tell you guys. I will now wait for I think most probably Reliance now will come to 2300 to test. Now this is a contradiction, right? If Reliance comes to 2300, Nifty and Bank Nifty also might get dragged down. But Kotak has a hammer. So let's see who wins this battle. I hope the hammers win it. Yeah, we said no in our previous video that the stocks which have a smaller weight in the indices are likely to perform in the opposite direction to the index because there is a correlation. So Kotak in Nifty is not very heavy. So Kotak can in fact rally up, Bank Nifty can rally up with Reliance going down, which doesn't happen very often, but it can happen. It's not unheard of. It has happened before. So I mean, there is evidence of past 6 months Reliance hasn't done anything. So that's that. Let me quickly check if there is anything interesting to trade. Today's expiry was really horrid though. So just no premiums anywhere, but volatility, market going 150 down, 150 up, again 150 down, and then 3 p.m. candle. All in all, I have only managed to recoup the brokerage. And considering the day that we have had, I think just making the brokerage back is also not a small feat because the options were just doubling left, right, and center.
Okay, do we have we missed any of the setups that we wanted to share with our viewers? No, I think that's it. Kotak and Banknifty, I think, are enough. Yes, yes. Alrighty then, guys. Thanks for tuning in to After Hours with Bereez. This was Kshitij and Gandhar. Make sure you like this video, share it with your friends and family, subscribe to our YouTube channel, press the bell icon so that you get notified every time we upload Bank Nifty setup or After Hours with Bereez. Thanks.